कल मैंने बताया था 1 बजे एक्स सेनेटर जनाब मुस्तफा नवाज खोखर साहब आएंगे। उनका ह्यूमन राइट्स पर लेक्चर होगा और उसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी होगी। सारे मेंबर्स और वाइस चेयरमैन साहब तशरीफ लाएंगे। आज हमारे ऑनरेबल मेंबर नसीर कियानी साहब की तरफ से कुछ लंच बॉक्सेस का भी इंतज़ाम किया गया है और उसके फौरन बाद आपको इधर सीट्स पर ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन का ख्याल रखिएगा। तो आज की तकरीब का आगाज़ जनाब कारी साहब से मैं गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से आज की कार्रवाई का आगाज़। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم صدق الله العظيم. आज मुझे खुशी है कि मुझे एक नाम नात शरीफ के लिए ऑडियंस से है तौसीफ मुख्तार साहब तशरीफ लाएँ तातिर सुलेमान। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ ही ज़बाना दिल में तुझे रख लूं ए जलवे जाना बेखुद किए देते हैं। क्यों आँख मिलाई थी क्यों आग लगाई थी क्यों आँख मिलाई थी क्यों आग लगाई थी अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना आ दिल में तुझे रख लूं। जी चाहता है तोहफे में बेचूं मैं उन्हें आँखें जी चाहता है तोहफे में बेचूं मैं उन्हें आँखें
दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, आ दिल में तुझे रख लूं। पीने को तो पी लूंगा, बस अर्ज जरा सी है। पीने को तो पी लूंगा, बस अर्ज जरा सी है। अजमेर का साकी हो, अजमेर का साकी हो, बगदाद का मेखाना, आ दिल में तुझे रख लूं। ए जलवे जानाना, बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जावाना। जज़ाकल्लाह। आज आपका जो लेक्चर है वो आपका सामने आ रहा है, लॉ मेकिंग प्रोसेस एंड स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन है। फ़ाद अमीन साहब परमानेंट फैकल्टी मेंबर है क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी में, और इन्होंने लेजिस्लेशन पर पिप्स में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री सर्विसेज में काफ़ी काम किया है एज ए कंसल्टेंट, और ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। एंड आई थिंक इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर फ़ाद अमीन तशरीफ लाएँ और अपने लेक्चर का आगाज़ करें। Assalamu alaikum. Hope everyone is doing well. Today, the topic is about lawmaking and statutory interpretation, and I see that the audience consists of practicing lawyers. आप लोग practice में ही जा रहे हैं और आगे, I mean, you're going to practice law. So it's a very basic sort of thing, and I think you must have studied it during your LLB as well. This is a subject जो आपने थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन इसको थोड़ा सा importance इसलिए दिया जाता है because sometimes we do miss certain things, right? जैसे legislation का जो process है in the two houses वो important है, and then of course whenever you see the laws, I mean this is the practice which I have seen happening. I'm not saying this is a general truth, but usually what happens is कि आप जब भी किसी law को, किसी act of parliament को, किसी ordinance को देखते हैं, तो आप simply you just go and see the section जो कि आपको जरूरत है, जिसकी होना भी ऐसी चाहिए practically speaking. But sometimes it's necessary to understand a little bit of background कि how this entire statute is structured, किस तरीके से हुआ है, कहाँ पे applicable है, is it applicable in Islamabad capital territory, in the federal, at the federal level, or in the provinces? So these are the things I think which we must know. Ji, please, next slide. So as you know, law making process जो है ये इसलिए important है because we are sitting here, I mean we are holding this gathering. Say for instance, some of you draft a very good piece of law or legislation, ठीक है, एक bill आप draft करते हैं, it's a proposal, it asks citizens to do something, ठीक है, say you make certain action a crime, जैसे just for sake of argument, नीचे जो parking है वहाँ पे अगर आप कार खड़ी करेंगे तो आपको जो है parking का चालान किया जाएगा, या आप यहाँ पे बैठ के law बना लेते हैं. So do you think we can call it a law or not? Anyone? Because this is an August gathering, you're all law-knowing people here. So can we call it a law or not? नहीं कहेंगे उसको, because competent authority, it's very necessary. I mean, without the competent authority, जो कि हमारे केस में पार्लियामेंट है, किसी और केस में अगर इन केस if there is a monarchy, तो monarch का जो एक edict है, monarch की जो एक आप कह लें कि उनका फरमान है, that is the law. तो authority और competence behind law is very necessary. In our case जो चीज़ आती है वो parliament इस चीज़ को deal करती है. अच्छा, usually whenever I speak तो मेरा जो है one way mode of communication नहीं होता, so even if you would like to comment or you would like to ask any question, I'm here. आप दरमियान में मुझे interrupt भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं. So what purpose does the legislation serve? जी, anyone? आपसे से पूछ रहा हूँ.
कि why do we need legislation or law making? क्या इसकी जरूरत है? Regulate the system, sir. For the smooth running of the affairs of society. Exactly, sure. Human behavior को वो करना अपना रेगुलेट करने की आप लोग बात करें बिल्कुल देखिए प्राइमरीली वी आर ऑल सिटिंग हियर और आप डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ में प्रैक्टिस भी करेंगे आगे जाके विच एवर सूट्स यू आप देखते हैं कि ह्यूमन लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ना अगर आप इफ यू लेट द ह्यूमंस डिसाइड फॉर देमसेल्व्स तो देयर इज दिस पॉसिबिलिटी दैट थिंग्स माइट गेट आउट ऑफ कंट्रोल व्हिच मींस कि आपका जितना भी एक तरह से माहौल है माशरा है you need order, you need specific rules. अगर वो नहीं होंगे तो you'll not be in a position to run a society in a peaceful manner. Public order important है. Next please. So there are certain, I mean this is not an exhaustive list by any means, लेकिन generally speaking if you see this तो इसके अंदर primarily जी आपका accountability along with the responsibility जो कि law making में एक important element है वो important होती है. And of course we will not have good laws अगर हमारे पास public जो है if public is not in a mood to accept those laws binding upon themselves. That is why they say even though we see the laws that have been there since 1836 अगर आप लोग Pakistan Court I think that resource has been shared with you pakistancode.gov.pk is the website जो law ministry manage कर रही है अगर आपने statutes देखने हैं even in the chronological order to this date I mean today तो आप you'll have to visit that website तो आप देखेंगे कि 1836 I mean this is the colonial era but we still have laws that have been here for so long time ठीक है आप जब practice में जाते हैं you do feel that there are certain inadequacies attached to the laws passed by the colonial rulers ज़ाहिर है we were not the masters back then but we are still following those legal instruments in some ways ठीक है अब important ये है कि law making or legislation it must be made holistic which means that it should not be too much technical आजकल जो trend है I mean usually lawyers want it to be technical but the thing is कि it should be subject friendly laws की जो language है ना should not be too much legalistic अब आजकल के दौर में मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही आप उसको माइनस कर दें but still and secondly there must be acceptability by the public I mean if you're sitting here and we pass a law that 90% of you the audience thinks that it's an unfair law or it goes against our public norms तो फिर उस केस में उस लॉ को आप इम्प्लीमेंट तो कर लेंगे ट्राई करेंगे बट वो बैड लॉ जरूर होगा उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पब्लिक में शायद ना हो एंड वी विल फाइंड इट हार्ड फॉर द पीपल टू एक्चुअली फॉलो और एडहियर टू इट्स प्रोविजंस ठीक है जी नेक्स्ट प्लीज So primarily जी हमारे जो constitutional system है I mean I'm going to talk from the perspective of the Constitution of Pakistan 1973 जो हमारा constitution है उसके perspective में हम बात करेंगे law making की जो exercise है उस हवाले से So what I would like to ask you देखिए इसमें there are two primary types जी ordinance and acts of parliament You do see ordinances in your statute book don't you नजर आते हैं ना आपको still ordinances नजर आते हैं And then there is this case of delegated legislation. ये अगर आपने जो है administrative law पे यहाँ पे कोई discussion हुआ है तो उसके अंदर this is the topic for that. लेकिन can anyone tell me the difference between the two instruments? These commonly used instruments or applied instruments कोई आप ऐसे बताएगा मुझे कि what's the basic difference between the two instruments under our constitutional scheme? Anyone जी? सर अगर पार्लियामेंट का सेशन नहीं हो रहा तो फिर ऑर्डिनेंस होता है जी जी बिल्कुल ordinance is basically passed by the president and the act of law passed by the parliament is statute and delegated legislations are certain laws which parliament delegates to institutions. They are also sometimes referred to as bylaws. Bylaws, true. That's an I mean good definition of the bylaws, which means that it's not possible for the parliament to deal with each and every affair of an institution, right? Say, I mean, इस अपने बार काउंसिल को ले रहे हैं, ठीक है? पाकिस्तान जो है बार काउंसिल का जो एक्ट है 1976 का, that's the main legislation. It's the act of parliament. Under that, there are certain rules that are being framed by different provincial bar councils जो करती हैं. वो आपकी delegated legislation की domain में आता है. Ordinance के हवाले से बिल्कुल I mean here
I heard a definition जिसके अंदर बात थी कि it's passed by the president, of course it's passed by the president, लेकिन जो primary difference है between the two instruments आपने जो देखना होगा, that is कि ordinance is a temporary legislation, right? और act of parliament, a permanent act of parliament भी नहीं है in a way, I mean, but you need to repeal the act of parliament to put it off the statute book. अगर आप उसे repeal नहीं करते हो, तो it remains on the statute book और वो applicable रहता है. Ordinance का time है, please आगे करिए. जी, so Article 89 of the Constitution of Pakistan. What does it say? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि the parliament must not be in session. And there must be, I mean, this is the language of the article which says that Parliament must not be in session. And secondly, there must be an urgency of some sort that you need a legislation for that period. अगर आपको वो नहीं करोगे pass, तो there is, I mean, immediate chance of something bad that's going to happen. That is why you need ordinance. It should not replace an act of parliament. I mean, act of parliament के पीछे एक थोड़ी सी जो theory है, that is कि ये इसके ऊपर एक ownership होती है of the two houses, Senate and National Assembly. Then does anyone know कि जो ordinance है उसकी लाइफ कितने टाइम की है? जी, 120 days, right? So after 120 days, can it be extended or not? जी, कैसे? पार्लियामेंट में सबमिट किया जाएगा तो जी, एक्चुअली बिल्कुल देखें, इस पे दो बातें आती हैं. देयर आर टू टाइप्स, प्राइमरीली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशंस. एक को कहते हैं मनी बिल, राइट? मनी बिल का आइडिया है? Sir, money bill is basically passed from National Assembly. Yes, but the money bill is actually related to the finance, to the revenues of the state. कि आपके जो टैक्सेशन के मामलात हैं, आप सुनते होंगे अक्सर कॉमन पार्लेंस में दैट मनी बजट आ रहा है, right? And Parliament passes a law that imposes certain taxes upon the people. या टैक्सेस रिमूव भी करे तो वो भी एक मनी बिल ही है टेक्निकली. फाइनेंस बिल का नाम आपने सुना होगा, हर बजट के अंदर देयर इज अ फाइनेंस बिल. वो मनी बिल की डेफिनेशन में फॉल करता है. नाउ आपने जो बात की दैट्स एक्चुअली एक्यूरेट, दैट मनी बिल अंडर आर्टिकल 73 कैन ओनली ओरिजिनेट इन द नेशनल असेंबली. ठीक है, उसके पीछे जो प्रिंसिपल है वो एक आप समझ लें कि प्राइमरीली डेवलप्ड इन द लेट 17th सेंचुरी कि नो टैक्सेशन विदाउट representation, right? इसीलिए जो आपके directly representatives आते हैं, I mean, who are elected by the National Assembly, they have this right to actually see whether a certain tax should be imposed upon the public or not. मतलब ये कोई वैसे executive authority अगर कोई ऐसा काम करेगी तो it will be ultra vires, which means कि आप गलत कर रहे हैं. And besides the money bill, there are other types of bills जो कि आपकी बाकी तमाम चीजों से डील करते हैं. अब अगर in case if it's a money bill, then it must be presented in the National Assembly. After ordinance अगर कोई money bill, say finance ordinance आता है कोई दरमियान में, President साहब एक ordinance promulgate करते हैं, that ordinance is related to revenue of the state. उसको आपने present करना है in the National Assembly. But as far as other bills are concerned, they must be presented in the both houses of Parliament, Senate में भी और National Assembly में. जो ordinance आएगा related to other subjects other than money bill. So बिल्कुल जी ये 120 days है, लेकिन remember this, under the provisions of Article 89, 120 days is the maximum limit. I mean, you can actually take an ordinance off the statute book by passing a resolution in the either house. अगर सेनेट के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है अगेंस्ट एन ऑर्डिनेंस और वो रेजोल्यूशन मेजॉरिटी पास कर लेती है, सेनेट की जो मेजॉरिटी है, then the ordinance is no more there. Ordinance loses its value. This is written in Article 89. और नेशनल असेंबली में भी सेम वाइस वर्सा चीज है कि ऑर्डिनेंस आया, प्रेसिडेंट साहब ने एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया एंड सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है या नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है which says that we don't want this ordinance to be on our statute book, we don't want this law. So technically the ordinance loses its value. But as far as the ordinance is concerned, इसकी जो authority है that is actually equivalent to the Act of Parliament. जैसे Act of Parliament उस time frame के लिए for the time frame of 120 days वो चीज आपकी applicable है. And again then जी next जो बात आती है वो कुछ ऐसे है कि 120 days के अंदर अगर in case if the Parliament thinks that we need this law for another 120 days, right? So they can extend it for further 120 days, but then this extension is only one time,
राइट, इसके बाद से एक्सटेंशन नहीं हो सकती। तो ऑर्डिनेंस का कुछ ये मामला है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर समटाइम्स यू सी दिस हैपनिंग, ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी क्या है, ऑर्डिनेंस कब तक वैलिड है, कब इनवैलिड है। सो यू मस्ट रिमेंबर द लैंग्वेज, द इंटेंट ऑफ आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट प्लीज। सो प्राइमरीली जी बिल जो है, दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, राइट। I mean, this actually translates into an act of parliament. हम बिल की अब बात कर रहे हैं। बिल जो है वो it's a proposal, right? But it's a technical sort of proposal. ये ऐसी कोई prose writing नहीं है which we do in our English class. It is a technical proposal which is, I mean, in a format, और उसकी बेसिस के ऊपर आपका बिल पास होगा। So does anyone know कि what's the procedure? I mean, I'm not asking for the specific procedure, but what's, I mean, your general impression about passing a bill from the parliament? Could you आप में से please, if someone could shed light on this? Anyone? How does a bill become an act? You have spoken a lot. I mean, I need to give opportunity to other people. Ji, from this side. Move from one house to another, and then it's approved if the second house approves it as well. One third. Yes, that's. One third required. And after that, the president gives its assent, right? जी. सर अगर इसको मतलब सेनेट में पेश किया गया तो सेनेट की जो 1/3 मेंबर है वो पास कर ले, उसके बाद वो नेशनल असेंबली में जाएगी। Actually, I mean, as far as normal legislation is concerned, I'm not talking about the constitutional amendments. जो normal legislation कोई भी है ना, it requires sitting members जो हो उनकी majority. Say, we have this gathering, और यहाँ पे आप लोगों की तादाद अगर 100 है और आप 100 लोग नहीं हैं, यहाँ पे 90 लोग हैं, तो आपकी जो मेजोरिटी 90 के हिसाब से बनेगी, which is 46, वो that would count, ठीक है। 46 members are on board, तो वो चीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में there is a caveat attached, वहां पे you can't actually do that। उसके अंदर you require total or 2/3 of the total number of the both houses, ठीक है, Senate or National Assembly। So this is how bill passes। So it's a proposal, right जी, proposal for enacting something, जिसके अंदर आपको एक तरह से मतलब why do you need a law? I mean, we are an over legislated country, कह सकते हैं आप इस बात को। We have laws on every subject, almost every subject, ठीक है। So होता कुछ यूं है कि whenever the parliament passes the law, तो उसके अंदर they need to consider whether we need a new law or we can amend an existing piece of legislation, right? अगर आपको मतलब always it's not necessary to repeal an older law and to make a new law. That is why you see कि amendment bills भी आते हैं, ठीक है, which amend the scope of the law, amend उसको थोड़ा बहुत चीजें tinker करते हैं and the instrument remains there. But if you need a special law, जैसे say for cyber crimes, we did not have a law in place before 2016, right? तो जो Prevention of Electronic Crimes Act 2016 का, it's a special law dealing with the cyber crimes. A need was felt कि अगर आपने जो है cyber crimes के साथ deal करना है तो you need a special legislation in place, ठीक है। Your normal legislation जो PPC की provisions है, general जो criminal law है या related laws है, they are not adequate to deal with this। तो आपको जो है जरूरत इसकी है कि you need a special law। So it depends कि bill आप किस चीज के लिए ला रहे हैं। Is there a need for the bill? ठीक है, there must be a debate on this। Just for the sake of, I mean, making the laws, वो चीज वो exercise futile है, उसके अंदर कोई फायदा आपको नजर नहीं आता। Next please। जी, primarily जी, the procedure is simple, ठीक है। I mean, it does take a while. When I was working in the parliament, I saw this happening more often than not, that आपको जो कमेटी स्टेज के ऊपर बिल्स के ऊपर डिबेट्स होती हैं, they take a long time. But for our purposes right now, आप ये समझिए कि जो बिल है, इसकी जो पैसेज के तरीकाकार है, that is somewhat simple. It may originate in either of the houses, which means it can originate in Senate, it can originate in National Assembly, and if one of the houses passes it, it goes to the other house. If that house passes it too, then it goes to the president, and the president gives assent. Assent का meaning होता है he signs. President की जो powers है not to sign a bill वो limited कर दी गई हैं after the 18th constitutional amendment.
I mean, article, if I'm not wrong, so Article 73 is the relevant provision to deal करती है presidential power to, I mean, delay a legislation, right? वो एक दफा वापस भेज सकते हैं for reconsideration, and if the after reconsideration a bill is still passed by the parliament, the president, even if he does not sign upon the bill, does not give his assent, it would be deemed as if he has given his assent after 10 days. ठीक है जी, 10 days के बाद assent उनकी समझी जाएगी कि complete है. So, जी. Next, please. अच्छा, ये तो था general procedure, but we must be aware of the specific provisions in the constitution, right? अगर आप constitution में article 70 को देखें, तो I mean, I hope this is visible. अगर नहीं है, तो I'm actually telling you about it. First, जो चीज़ है वो ये है कि say a bill originates in the National Assembly, ठीक है? It is passed by the National Assembly. It goes to Senate. It is passed by the Senate. Ultimately, it goes to the President, and it becomes an act of Parliament. This is simple procedure. There's no complexity attached to it, right? For instance, my question to you is: say a bill is passed by the National Assembly. It goes to the Senate. Senate proposes certain amendments upon it. Then what would happen? Anyone? It would go back to the National Assembly. And if National Assembly passes that bill along with the amendments, then it will go directly to the President. And the President would give his assent to the bill and it would become an act of Parliament. Yes, next one, please. So, this would become an act of Parliament. Now, another proposition is, say, the other house makes amendments, ठीक है, दूसरे house में amendments की जाती हैं, and those amendments are not passed by the house in which the bill originated. Then what would happen? No, sir. No. Anyone else, please? I mean, let me just rephrase this. A bill is passed by National Assembly. It goes to Senate. Senate either does not pass the bill, or Senate proposes certain amendments, which again go back to National Assembly, and National Assembly do not agree with those amendments. You are sitting, sir. Yes. Then the remedy is, next slide please. Then the remedy available to us is that the bill would ultimately go to the joint sitting of both houses, which means Senate and National Assembly members would sit together and they would see whether we need to pass the bill or not. And of course, the majority of those members would count. I mean, जो majority फैसला कर देगी, if the majority goes against the bill will not be passed. If it goes, if the majority passes the bill would be passed. तो ये आपका Act of Parliament बन जाएगा. This is Article 70. Now remember, the caveat is that we are talking about, ये जो example आपके साथ मैंने share किया, this is about a bill that is not a money bill. In case of money bill, it can originate in the National Assembly. It can go to the Senate for recommendations only, right? But those recommendations are not binding upon the National Assembly, which means कि voting right Senate का उस bill पे नहीं होता. Wherever finance is attached, wherever revenue provisions are attached. आगे करें please. So primarily, provincial assemblies का भी procedure is similar. However, you know that in our provincial assemblies, say Punjab Assembly, Sindh Assembly, Khyber Pakhtunkhwa Assembly, Balochistan Assembly, we have only one house, which is the provincial assembly. उसमें भी procedure यही है, the bill is passed by that house, it goes to the governor, right? The federal head or provincial head is the governor right there. Executive जो head है वो chief minister है, लेकिन for the bill to be completed, act of parliament अगर बनना है तो it goes to the governor, and if governor gives assent तो वो pass हो जाता है. Now I'm coming to a very important topic, and I would like your feedback and your input on it. कि आप मुझे ये बताएं कि legislative competence क्या है parliament का? I mean, federal legislative competence क्या है and provincial legislative competence क्या है? What type of legislations can our federal parliament, which is the National Assembly or Senate, can pass? And what types of legislations can the provincial assemblies pass? Anyone? And I would actually be very happy if you could refer to the constitutional provisions in that regard. Ji. The federal parliament can pass any law that is stated in the federal legislative list. The subjects that are stated in that. And provincial legislatures similarly can pass any bill which is mentioned in provincial legislative list. Do we have a provincial legislative list in our constitution? That's the question. There is a concurrent list. No. Do we have that? No.
after 18th amendment it has ceased to exist. Next slide, please. Okay, so first of all, we don't have a provincial legislative list. We only have a federal legislative list, and it consists of two parts in our constitution. ठीक है, if you could see, तो यहाँ पे ये चीज mentioned है about the competence कि आपने ये जरूर देखना है before assessing any legislation कि is it in the domain of the federal parliament or not? अगर वो domain में नहीं आ रही है, तो you can always challenge it in the court of law, right? You can say that this legislation is unconstitutional. Say, मैं आपको example देता हूँ. In case the federal parliament passes a law that regulates primary education in the province of Sindh, so is that a legislation that the federal parliament can pass or not? No. Because it does not fall within the federal legislative list. What the 18th amendment did was कि उसने आपको ये दे दिया कि what is the actual limits of the federal parliament, of the federal government, federal parliament जो आपकी national assembly senate है, which type of laws can it pass and which it can't. जो residual जितने भी subjects बनते हैं, जिसपे education आ जाती है, health आ जाती है, even environment आ जाता है, वो तमाम जो subjects हैं, they have been delegated or they have been at the authority of the provinces, and if the federal government passes those laws, so they would be unconstitutional क्योंकि वो अपनी domain से बाहर आ रहे हैं. Article 142 of the Constitution actually tells us कि क्या आपके पास फेडरल पार्लियामेंट के पास क्या अथॉरिटी है, प्रोविंशियल पार्लियामेंट्स के पास क्या अथॉरिटीज है, राइट? सो इफ यू सी कॉम्पिटेंस जो है दैट इज मेंशन्ड इन एज आई मीन वन ऑफ योर ऑडियंस सेड कि इट इज मेंशन्ड इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट गिवन एट द एंड ऑफ द आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आखिर में शेड्यूल्स है, राइट? उन शेड्यूल 4 है जिसमें ये चीज मेंशन्ड है, एंड अगर आप देखेंगे उसको शेड्यूल 4 को तो वहां पे 4th शेड्यूल के अंदर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट मेंशन्ड है. फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट कंप्राइजेस ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, राइट? मैं उस पे आता हूँ वो क्या है, लेकिन राइट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द फेडरल पार्लियामेंट कैन डू, व्हाट टाइप ऑफ लॉज कैन इट पास एंड व्हिच टाइप ऑफ लॉज इट कांट पास. सो द नेक्स्ट इज कंटेंट. अब कंटेंट लिस्ट इज टेक्निकली नो मोर देयर, बट देयर आर स्टिल 3 सब्जेक्ट्स which have, I mean, which are of content nature. वो कौन से हैं? लिखे हुए यहाँ पे, I'll just repeat them. Criminal law, criminal procedure and law of evidence. ठीक है जी? इसके ऊपर, I mean, there is, I mean, both of the federal legislature as well as the provincial legislatures, they share these subjects in a way because either one of them can pass a law. ठीक है? But when you say, आप इसको जब देखते हो नेक्स्ट आर्टिकल को, तो उसमें लिखा, I mean, if there is a clash between the 2 laws, तो which will prevail? ये क्वेश्चन है मेरा. जी. Article 143 of the Constitution says that अगर आपका clash आ जाए ऐसे laws में जो कि मतलब say एक criminal law है which is passed by a province and there is a criminal law which is passed by the federal government, right? तो अब जो फेडरल गवर्नमेंट का लॉ है उस केस के अंदर वो प्रिवेल करेगा, जबकि जो प्रोविंशियल लॉ है उसको आप नहीं समझेंगे. ये कंटेंट लिस्ट में लिस्ट नहीं है. दीज आर जस्ट 3 सब्जेक्ट मेंशन्ड इन आर्टिकल 142 जिसके अंदर क्या है कि आपके जो प्रोसीजर बेसिकली क्रिमिनल प्रोसीजर, लॉ, क्रिमिनल लॉज एंड लॉ ऑफ एविडेंस, ये वो 3 सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर बोथ द लेजिस्लेचर्स, आई मीन द फेडरल एज वेल एज द प्रोविंशियल कैन मेक लॉज. ठीक है? लास्टली जी जो आप देखें, लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव बाय एनी मींस. जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, आप सारी चीजें तो वहां पुट नहीं कर सकते. देयर मे बी न्यू सब्जेक्ट्स जिस पे लॉ मेकिंग की जरूरत है. सो दे फॉल विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ प्रोविंसेस, which means the residual subjects, जितने भी residual subjects हैं which are not mentioned in federal legislative list, अगर आपको इस लिस्ट में कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता and you want to pass a law, तो आपने अगर नेशनल असेंबली या सेनेट से उस लॉ को पास करवाना है तो you can only pass it to the extent of इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, राइट? उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते. You can't legislate for the provinces. सिंपल टर्म्स में ये बात आती है. लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है to see the whys of a particular legislation. If an assembly, a provincial assembly passes a law that is, I mean, passes a law on a subject that is located in the federal legislative list, so the provincial assembly has exceeded its mandate under the constitution. ठीक है? वो नहीं कर सकते ये काम. The legislation would not take effect. जब आप जाएंगे उसको चैलेंज करेंगे तो वो legislation ultra vires हो जाएगी and it could be struck down by the court of law. So primarily, next please. Primarily, the legislative lists tell you the mandate, the respective mandates of the federal government, of the federal legislature or parliament, and the provincial legislature. कि क्या
फेडरेशन कर सकती है काम, क्या आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज कर सकती हैं। आफ्टर 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये चीज बहुत क्लैरिटी के साथ आ गई है। इससे पहले देयर वाज अ कंकरेंट लिस्ट, राइट, बट व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज कि यूजुअली फेडरल गवर्नमेंट के लॉज ही प्रिवेल करते थे। एंड एज यू नो दैट 18th अमेंडमेंट का जो एक मेन थ्रस्ट था उस लेजिस्लेशन का, दैट वाज कि उसके अंदर आपने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देनी थी। आई मीन इट वाज लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। सो दैट ऑटोनॉमी कुड ओनली बी पॉसिबल अगर आप लॉ मेकिंग का जो फंक्शन है उसको डिवॉल्व कर दें प्रोविंसेस को, जो उनकी डोमेन में आती हैं चीजें। नेक्स्ट प्लीज। So you could see ये कुछ subjects हैं which I have mentioned. You can always consult the fourth schedule. I mean, what from a practical aspect, जब भी आप किसी legislation को देख रहे हो, तो you must see first of all कि क्या ये legislation federal parliament पास भी कर सकती है कि नहीं. For that you need to consult the fourth schedule of the constitution, जिसके अंदर दो parts आपको मिलते हैं. उसके अंदर ये lists हैं. Part 1 में if you could see, तो this is exclusively the jurisdiction of the federal parliament. ठीक है, इसमें provincial domain बिल्कुल भी नहीं आती. वो कौन सी है? डिफेंस, करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, राइट, ये चीजें ऐसी हैं जो कि सोल डोमेन है आपकी फेडरल गवर्नमेंट का। नाउ पार्ट 2 इज समवट इंटरेस्टिंग। आई मीन देयर मे बी सर्टेन सब्जेक्ट्स जो कि सारे मुल्क के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे रेलवेज, रेलवे लाइंस और नॉट जस्ट पासिंग थ्रू इस्लामाबाद, बल्कि यहाँ तो आई थिंक काफी कम है, बाकी पूरे मुल्क में जा रही है, उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसके अलावा आपके और भी चीजें हैं, नेचुरल गैस है, रिसोर्सेज है, मेटल, सेंसेस का मसला आजकल चल रहा है। These are the subjects where you see that there is a shared sort of domain between provinces and the federal government, federal parliament. तो इसलिए इसको आपने पार्ट 2 में ऐड किया हुआ है, ठीक है। What the part 2 says is, किसी को आइडिया है जी what's the difference between the two parts? Does anyone know that? Part 1 exclusively federal parliament, they need not consult anyone. Part 2, there is a special forum called Council of Common Interest, CCI. ठीक है? If you please, you can move to the next slide. It's a joint forum between the federation and the provinces. If I'm not wrong, it's in Article 153 or 154. Check कर लीजिए. 153, you see the composition. अगर आप इस composition को देखें, and if you could read this slide, तो इसमें members में you can see there's Prime Minister, there are 4 Chief Ministers and 3 members nominated by the federal government, which means that whenever subjects related to the part 2 of federal legislative list are concerned, तो वो पहले आप इसमें डिस्कस करेंगे. After that, pass ये parliament करेगी उसको. The federal parliament would pass laws upon those subjects. However, ये जो चीजें हैं जितनी भी CCI से related, इसमें ये डिस्कस होंगी. If they approve it, ये जो council है इसमें majority द्वारा फैसला करेगी, and then you can pass the law. I mean, there is this forum which needs to be consulted before you pass a certain legislation upon the subjects that are located in federal legislative list part 2. उसका reason और उसकी justification बड़ी clear है. वो ये है कि these are the subjects जो कि affect करते हैं in some ways. I mean, minerals हैं, resources इस type के हैं, natural gas है कहीं पे. It has an impact upon the provinces, right? So if they have an impact upon the provinces must have ownership in that legislation, and that ownership can be derived through this forum. ये जो forum CCI का है, it gives you this, I mean, ownership जिसकी वजह से आप laws pass कर सकते हैं उन चीजों पे. Sir, CCI में apart from discussing it, approval का mechanism क्या है? For example, अगर बलूचिस्तान से related कोई आ रही है, minerals से related कोई legislation आ रही है, if Chief Minister Balochistan does not agree, तो majority prevail करेगी. Majority prevail करेगी. ये इसका mechanism majority भी है क्योंकि ये members हैं सारे ना वहाँ पे. और Prime Minister की discretionary powers होती है? नहीं, ये जो voting होगी इसमें कोई से अगर in case कोई भी मसला है, equal सबकी 4 provinces हैं, ठीक है. लेकिन primarily if something affects a certain province, it will not be possible क्योंकि usually जो हमारा structure है, sometimes बल्कि आप देखते भी हैं कि you don't have all the governments of one party in the country, right? There is this possibility. Secondly, अगर हो भी government, so when these people come here, so they actually represent the interests of their respective provinces. वो as CM आते हैं वहाँ पे. Now if something is affecting them, तो वो फिर इसको करेंगे discuss. It's not that easy. I mean, क्या आपको you need to have lobbying for passing this, लेकिन majority prevail करती है, ये इसके अंदर आते हैं. CCI का ये मैकेनिज्म है. इसके अलावा भी देयर आर सर्टेन फोरम्स, ठीक है, जो कि इससे डील करते हैं, लेकिन जो प्राइमरीली पार्ट 2 के सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आपको नजर आती है. रिसेंट हिस्ट्री में अगर देखें तो थोड़ा सा एक केस था विच वाज एक्चुअली विंडिकेटेड. उसमें
चेयरमैन सेनेट थे ऑनरेबल सेनेटर रजा रवानी साहब थे उस टाइम पे, एंड एक मिनिस्ट्री को जो है ना रेगुलेटरी अथॉरिटी को अंडर द लाइन मिनिस्ट्री कर दिया गया था उस टाइम पे, ठीक है, बैक इन 2015 और 16. उस पे द चेयरमैन सेनेट गेव अ रूलिंग बाय एक्चुअली कंसल्टिंग दिस आर्टिकल. इस आर्टिकल की बेसिस पे उनकी रूलिंग आई, एंड इन दैट रूलिंग ही सेड दैट ये जो मसला है रेगुलेटरी अथॉरिटीज का, रेगुलेटरी अथॉरिटीज फॉल विद इन द पार्ट 2 ऑफ द लिस्ट. सो इफ दे फॉल विद इन द पार्ट 2 ऑफ द लिस्ट, the federal government cannot unilaterally transfer it under the line ministry. This forum must be consulted. इसलिए उनकी जो वो थी फेडरल गवर्नमेंट की, जो उन्होंने लाइन मिनिस्ट्री के अंडर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी को किया था, उसको उन्होंने रिवर्स कर दिया थ्रू दैट. और ये फिर वेंट टू द कोर्ट बिकॉज समटाइम्स समझा यही जाता है कि जो रूलिंग ऑफ द पार्लियामेंट है उसकी वो एक वैल्यू नहीं होती, एक बाइंडिंग हैसियत वैसी नहीं होती. लेकिन थिंग इज कि दैट वाज विंडिकेटेड, दैट स्टांस वाज विंडिकेटेड, क्योंकि अगर आप आर्टिकल 154 की लैंग्वेज को देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि एक तो लॉ मेकिंग भी इसके साथ रिलेटेड है, एनी पॉलिसी मेकिंग भी जो है ना दैट फॉल्स विद इन द डोमेन ऑफ सीसीआई. मतलब अगर इफ यू वांट टू डू एनीथिंग with the subjects mentioned in the part 2 of the legislative list, CCI must be consulted at all costs. अगर आप नहीं करोगे तो आपकी जो legislation है it will lack validity, वो चीज properly नहीं समझी जाएगी. जी, next please, next slide. Okay, so थोड़ा सा जी procedure जो है it must be mentioned. There are certain categories of bills, ठीक है. One is the आप कह रहे हैं government bill, private member bill, money bill, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. ये मैंने प्राइमरीली थोड़ी सी आप कह लें कि चीजें मेंशन की हैं. तो आप में से किसी को थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो अबाउट द गवर्नमेंट बिल एंड अ प्राइवेट मेंबर बिल इन पार्लियामेंट, तो यू कैन प्लीज शेयर दैट आइडिया. जी, व्हाट्स अ गवर्नमेंट बिल, व्हाट्स अ प्राइवेट मेंबर बिल? एनीवन? आई मीन दिस इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम्स, क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेम है, तो क्या इसका मतलब है? जी, मैं बता देता हूँ. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन. गवर्नमेंट बिल इज प्लेस्ड by a minister or a person holding a portfolio in the government. Cabinet member कोई होंगे जो government bill move करेंगे. Any other bill, I mean even if a person is not holding any office in the government party or in the treasury benches, उसके bill को आप private member bill कहेंगे. For a bill to be government bill, उसके ज़्यादातर bills government bills ही होते हैं. Legislative agenda जो set किया जाता है parliament में, that is pertaining to the government bills. क्योंकि अगर government का mandate है कि वो आए हैं election जीत के, so they can pass the legislation, whichever legislation they think fit. Private members को रोका नहीं गया. I mean, because इसका reason ये है कि as a private member you are representing your constituents. जरूरी नहीं आप government में हो, लेकिन you are actually well aware of the interests of your constituents. इन लोगों ने आपको elect करवाया है. So law आपको रोकता नहीं है. Private member bills are also placed. वो लेकिन उसमें government का नहीं होता. They draft, वो खुद draft करते हैं. Law division उसमें जो है vetting करती है उस bill की बाद में जाके. लेकिन law division उसकी drafting में involved नहीं होती. वो या तो खुद draft करते हैं या help लेते हैं private members who are not actually the ministers. वो उसमें ही आ जाती है. Is the public a private member? No, actually no. I mean, they must be members of parliament. They should not hold any office. They should not be ministers or cabinet members, but they should be members of parliament. I mean, public cannot push a bill into parliament. They can lobby for it. They can actually tell it to their representatives, but they cannot directly place legislation in the house. That's the answer. Ji. So, if we're talking about an amendment that's passed by a Senate standing committee, what category would that fall into? You're talking about an amendment that is passed by a Senate standing committee. To an existing, to an existing legislation. Yes, that depends. I mean, who moved the legislation? This is the primary question. If it is moved by a member who holds any portfolio in the federal government or provincial government, you will call that government bill. I mean, the language in the United Kingdom is public bill. लेकिन यहाँ पे government bill उसको कहते हैं. And if it is moved by any other person, I mean any person who is not a minister at the time, that would be private member bill, right? So it depends. Even if the Senate the committee stage is somewhat different. I mean, there they would discuss it in the committee. They would propose certain amendments, and if those amendments are passed, that is a different debate altogether. What I'm saying here is that you would have to see who moved the bill. Is it a person holding an office in the government, or is it a person who is just a member of the house but not holding any office? So that's the question. So can SAPM move the bill in the parliament? Yes, that would be a government bill.
That could be, I mean, he's part of the government in a way because he is holding an office on behalf of the government. So whatever, I mean, if you're holding a ministerial portfolio, SAPM usually have the status of Minister of State, right? Otherwise, they cannot come to the house. I mean, there's this concept of stranger to the house. Who can speak in the house, right? There is a special advisor in Article 94 of the Constitution who is appointed by the President. If that is the person, they have the right to speak. Under Article 57, you have certain people who can speak. Otherwise, no other person can speak on the floor of the House. Provided he is unelected, can he move the bill still in the parliament? Yes, of course. If the person is advisor appointed under Article 94 of the Constitution, then yes, that person can move a bill. And that's why you see people moving the bill in the House, because they are appointed as special advisors. And as per the provisions of Article 94 of the Constitution, they have the same status as a minister or a minister for state, right? So they can move the bill. Okay, so next is the money bill. इसको थोड़ा सा discuss करेंगे. And lastly, the constitutional amendment bill. Constitutional amendment bill is, I mean, a special sort of legislation. And as we all know, that our constitution is not that flexible like the constitution of United Kingdom. Our constitution is a rigid constitution, and it requires a super majority, not a normal majority, to pass legislation. Okay, to two-third majority. Next, please. So, if you want to know about a money bill, next slide, please. This is, I mean, the same next, please. Money bill. As the language of the Constitution says, it deals primarily with taxes. ठीक है, अगर कोई भी ऐसी चीज है जो कि फेडरल गवर्नमेंट आप पे इम्पोज कर रही है, कोई बोरिंग कर रही है फेडरल गवर्नमेंट रिलेटेड टू दैट, कोई सब्सिडी दे रही है किसी चीज पे, एवरीथिंग फॉल्स विद इन द डोमेन ऑफ द मनी बिल. आई मीन इट्स रिलेटेड टू द फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट, सो इसको मनी बिल कहा जाता है. नेक्स्ट करें प्लीज. Taxes तो normally SROs के through नहीं, वो मैं वही I was talking about SROs का जो मैकेनिज्म है वो आप डायरेक्टली अभी उसको डिस्करेज भी किया गया, उसकी लीगैलिटी को चैलेंज भी कर दिया जाता है. जो प्रोसीजर है ना, आई मीन ये देखिए, अगर इफ यू कैन सी दिस स्लाइड, आपको आ रहा होगा नजर, कोई भी जो रेवेन्यूज हैं विच द स्टेट रिसीव्स, कोई भी जो लोन्स हैं विच द स्टेट एक्चुअली ड्राइव्स. लोन्स कैसे हो सकते हैं? बॉन्ड्स फ्लोट करते हैं, बाकी चीजें, पब्लिक से मनी बोरो करते हैं, बैंक से मनी बोरो करते हैं, या मनी रिसीव बाय लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट्स भी लोन्स करती हैं. इससे रिलेटेड कोई भी लेजिस्लेशन अगर आएगी तो दैट मस्ट बी कॉल्ड अ मनी बिल. आप विदाउट इट थ्रू एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टैक्सेस नहीं लगा सकते. दिस इज अ डिबेट, आई मीन, कि अगर आप कोई भी टैक्स डिराइव करना चाहते हैं तो एसआरओ इज नॉट द वे टू डू दैट. उसकी लीगैलिटी के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं. पहले चलता था ये मामला काफी हद तक, लेकिन स्टिल नाउ इवन द कोर्ट्स आर वेरी मच कॉग्निजेंट ऑफ दिस फैक्ट दैट दिस शुड नॉट बी लाइक दिस एंड प्रोसीजर शुड नॉट बी सर्कमवेंटेड इन सच अ फैशन. ये एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी है. सो अब कुछ थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम प्लीज. अगर आप देखें तो जो आपकी एनुअल बजट स्टेटमेंट होती है ना, इट्स रिजल्ट ऑफ अ मनी बिल. ठीक है, जो बजट आता है आपका, हर साल बजट आता है, दैट्स योर मनी बिल. अब उस मनी बिल के अंदर प्राइमरीली जी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं विच आर डिराइव फ्रॉम द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड. ठीक है, FCF कहते हैं इसको. इसके अंदर जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से आप रेवेन्यू से जो भी चीज लेते हैं उसको आप डिस्कस कर सकते हैं नेशनल असेंबली में, बट यू कैन नॉट वोट अपॉन इट. आई मीन, इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट यूं भी है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं स्टेट के जहां सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रिवेल करवाना है, राइट? लाइक आपकी जुडिशरी है. नाउ इफ जुडिशरी आस्क्स फॉर अ स्पेसिफिक ग्रांट, ठीक है, फॉर अ ईयर, आप उसको उसके ऊपर यू कांट आस्क क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट. क्वेश्चन मतलब यू कैन डिबेट इट, बट उस पर वोटिंग आप करके उसे कम नहीं कर सकते. इसी तरह कुछ और हैं, सैलरीज है प्रेसिडेंट की, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है, अगर अलॉन्ग विद सेनेट एंड पार्लियामेंट की जो सारे एक्सपेंसेस हैं, ये तमाम जो है दे आर चार्ज्ड अपॉन, दीज एक्सपेंसेस आर चार्ज्ड अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, व्हिच मींस कि इन एक्सपेंसेस के ऊपर यू कैन डिबेट इन द पार्लियामेंट बट यू कैन नॉट वोट अपॉन देम. आप कटौती इसमें नहीं कर सकते इन सिंपलर टर्म्स. दूसरा जो होता है दैट इज पब्लिक अकाउंट. आई मीन बिसाइड्स दिस जो दूसरा अकाउंट है दैट इज पब्लिक अकाउंट, वहां पे जाहिर है यू कैन आस्क क्वेश्चन और उसके ऊपर वोटिंग का भी मैकेनिज्म होता है. नॉर्मली स्पीकिंग जो आपका ये है मामला इसका मनी बिल का,
जो आपकी एनुअल बजट स्टेटमेंट होती है यूजुअली इट गेट्स पास क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ द डे ने उसके मुताबिक रन करना होता है बिजनेस ऑफ द स्टेट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो दैट्स व्हाई वो पास उसको कर लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ यू कैन नॉट यूज मनी बिल टू एक्चुअली अमेंड द लॉज इन द नेम ऑफ मनी बिल। देखिए मनी बिल में कुछ आपको एडवांटेज मिल रहा है, प्राइमरी एडवांटेज इज इट ओनली पासेस थ्रू नेशनल असेंबली, ठीक है, और गोज डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट। इसके अंदर सेनेट की वो हैसियत नहीं है, व्हिच मींस कि एक स्टेप आप जो है ओमिट कर देते हैं टेक्निकली स्पीकिंग। सो समटाइम्स आई मीन दिस हैज हैपेंड ओवर द इयर्स एंड द कोर्ट हैज टेकन सीरियस नोटिस ऑफ इट कि समटाइम्स यूं होता है कि द गवर्नमेंट ऑफ द डे ट्राइज टू हाइड सर्टेन थिंग्स इन अ फाइनेंस बिल, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट करें प्लीज, इससे आगे, ये दिस इज अ केस लॉ, ठीक है, Mir Muhammad Idris versus Federation of Pakistan. What happened here was कि nationalization, Banks Nationalization Act is a legislation, ठीक है। Now it may deal with banks की nationalization जैसे इसका वो आपको टाइटल नजर आ रहा है, but it doesn't mean कि it's a money bill। अगर आप उसको साथ अमेंड कर देते हैं, हुआ कुछ ऐसे था कि under this law of Banks Nationalization Act, जो प्रेसिडेंट थे नेशनल बैंक के बोर्ड के, he could be appointed only twice, not more than 2, ठीक है। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि they wanted to actually appoint him once again, what they did was कि they added this amendment in finance ordinance of 2007, मतलब they tried to hide it behind a money bill, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो आपका बजट का बिल था, फाइनेंस ऑर्डिनेंस जो 2007 का आ रहा था, उसमें उन्होंने नेशनल बैंक का ये वाला लॉ भी छोटा सा अमेंड कर दिया कि ये 2 टर्म्स वाली लिमिट नहीं है, ताकि ये मनी बिल के साथ ही पास हो जाए। बात आ रही है समझ के नहीं? So they try to do that. This is not allowed. You can't circumvent the normal procedure. I mean, if a thing is not technically money bill, मतलब उसका स्टेट के टैक्सेस से, रेवेन्यू से, लोन से कोई तल्लक नहीं है, एक नॉर्मल लॉ से, एक प्रोसीजरल चीज से है कि whether a person can be appointed twice or more than that, तो वो चीज you can't put it in the money bill. You have to follow the usual procedure. दोनों हाउसेस से पास करवाएंगे, आफ्टर दैट आप जो है उसको मतलब नॉर्मल प्रोसीजर सर्कमवेंट करने की इजाजत नहीं है प्रोसीजर को। सो कोर्ट ने इंस्पेक्शन दिया और स्ट्राइक डाउन कर दिया कि फाइनेंस ऑर्डिनेंस के साथ आप इसको जोड़ के पास नहीं कर सकते। नॉर्मली हम देखते हैं प्रैक्टिस के, हमने जो देखा है कि वो बिल्स की कॉपीज ज्यादातर फाड़ने के लिए या उड़ाने के लिए यूज होती हैं, एंड देयर इज आल्सो एक परसेप्शन है कि पढ़ता भी नहीं है, बस वो जो पार्टी लाइंस के अकॉर्डिंगली वोट करते हैं। अगर इस तरह की कोई हरकत होती है, कन्वेंशन होती है, तो उसकी जो उसको रिवर्सल जो है वो फिर कोर्ट के थ्रू होगा या पार्लियामेंट खुद उसका कॉग्निजेंस लेगी एंड दे कुड टेक एक्शन? आइडियली क्या होना चाहिए कि हर चीज़ कोर्ट में जाती है? दूसरा सर क्वेश्चन, अभी आप जो पिछली बात कर रहे थे, डिफेंस बजट जो है ये कंसोलिडेटेड फंड में आता है या पब्लिक अकाउंट्स में? दिस इज नॉट इन एफसीएफ, उसमें नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है ऑफिसेस। हां जी एग्जैक्टली, ऑफिसेस मेंशन्ड है वेयर यू कैन एक्चुअली। सेकंड का तो आंसर है कि नो, इट डज नॉट कम विद इन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। उसमें मैंने जैसे आपसे अर्ज किया था कि कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी जगह पे दुनिया में, तो उसको उसका जो एक बेसिस, उसकी जो एक फंडामेंटल वो वैल्यूज है वो है कि इट इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स आप तभी एक्सरसाइज कर सकते हो जब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे। से इफ योर कोर्ट्स आर डिपेंडेंट फॉर देयर फाइनेंसेस अपॉन योर गवर्नमेंट, तो हाउ इंडिपेंडेंट वुड दे बी? ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। दैट इज व्हाई ये जो चीजें आती है ना उसमें कि ये जितने भी इदारों को दिया जा रहा है, इसी तरह पार्लियामेंट का भी है, ये जितने भी इदारे हैं, दे आर 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, दे मस्ट बी केप्ट सेपरेट, एंड टू कीप देम सेपरेट यू नीड टू हैव आई मीन दिस फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, इसलिए उन्हें उसमें रखा गया। जहां तक दूसरी आपने वो बात की, वो दैट्स अ डिपार्टमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, उस पर तो एग्जीक्यूटिव के डिपार्टमेंट की तरह आप बात कर सकते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो चीज नहीं है। नेक्स्ट जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था पार्लियामेंट, देखिए प्रैक्टिसेस डिफरेंट है, लेकिन कोर्ट जो है ना, इट्स अगेन वेरी लॉन्ग सॉर्ट ऑफ डिबेट कि ये जो सुओ मोटो पावर्स हैं या वैसे क्या कोर्ट, देखिए अंडर 184(3) जो आपकी है एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंडर सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की गई है। लेकिन यूजुअली ये होता है कि इट्स अ रिएक्टिव अप्रोच। आई मीन इफ अ सर्टेन बिल फेल्स टू मीट द क्राइटेरिया मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन and it's passed by the parliament and you would like to challenge that bill upon any consideration, लेकिन 2 considerations है। एक है आर्टिकल 8 में, if the bill is against the fundamental, if the act is against the fundamental rights of the citizens, कोई भी fundamental right infringe करती है। दूसरा कोर्ट जो चीज देखती है वो उसकी वायस, उसकी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसको चेक करती है, whether the bill is passed according to the provisions of constitution or not। अगर इनमें से कोई भी चीज मिसिंग है तो anyone can challenge it, क्योंकि ये एक आप कह लें कि it's a bulwark against tyranny of the majority
in any constitutional dispensation. इसलिए वो अगर कोई गवर्नमेंट पास कर भी दे एक फ्लॉड लेजिस्लेशन, देखिए हाउस की इंटरनल प्रोसीडिंग्स पे कोई रोल नहीं होता कोर्ट का, टेक्निकली स्पीकिंग. वट एवर हैपन्स इन द हाउस, आपने कॉपीज पढ़ने की बात की, बाकी चीजें, दैट इज देयर बिजनेस, उसके अंदर कोर्ट का कोई रोल नहीं है. बट एज फार एज लीगैलिटी ऑफ अ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट इज कंसर्न, whether this is legal or not, ये कोर्ट ने डिटरमिन करना होता है बेस्ड अपॉन कि क्या जो आपने चीज पास की है, does it fail to take into account the constitutional provisions or not. ये चीज थोड़ी सी पार्लियामेंट में कोई करेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है. पार्लियामेंट के अंदर जी ऑपोजिशन को ये चीज करनी चाहिए नोट, और जो भी ऑपोजिशन में पार्टी है. उसके अलावा गवर्नमेंट वाले तो यूजुअली दे वुड नॉट प्रेफर टू डू दैट, लेकिन जो लोग वहां पे बैठे हुए दे शुड पॉइंट इट आउट. आई मीन दिस इज इंटरेस्टिंग. लेकिन पार्लियामेंट में एक बात ये भी है कि अगर कोरम की ना हो, से कोरम आपका जो है ना 1/4 ऑफ द मेंबरशिप कोरम होता है, से नेशनल असेंबली में इट आई थिंक इट इज अबाउट 86 मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट. ठीक है जी. उससे नीचे अगर होगा तो आपने देखा है कोरम आइडेंटिफाई होता है और हाउस एडजर्न हो जाता है थोड़ी देर के लिए. ये दिस इज, लेकिन से इफ अ बिल इज पास्ड एंड द कोरम इज नॉट देयर एंड नो वन आइडेंटिफाइज द कोरम, स्पीकर ने खुद नहीं करना होता, तो तब वो बिल वैलिड पीस ऑफ लेजिस्लेशन. ओके, दिस इज नॉट इनवैलिड, क्योंकि ये इंटरनल प्रोसीडिंग का मसला हुआ था, इसका कोर्ट से डायरेक्ट पर से ताल्लुक नहीं है. ठीक है, इंटरनली पार्लियामेंट ने रेगुलेट नहीं किया अपना मैकेनिज्म, इसके ऊपर कोर्ट नहीं आ सकता, मतलब इन अ वे दे कैन नॉट टेक एक्शन अपॉन इट. दिस इज आई मीन हाउ दिस थिंग वर्क्स. अच्छा जी, सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है नेक्स्ट, इसके अंदर एज यू ऑल नो आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स यू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. यहाँ पे यू कैन एक्चुअली चेंज अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. 26 के लगभग अमेंडमेंट्स आ चुकी है, आई थिंक 26 अमेंडमेंट्स, 25 तक आई थी, 26. तो ये अमेंडमेंट प्रोसीजर कुछ यूं है कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल नंबर, विच मीन्स के आई मीन अभी नंबर जो है वो थोड़ा सा दोबारा से रीडिफाइन किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट मैं पुराने नंबर के हिसाब से अगर बात करूं तो सेनेट की अगर 104 सीट्स है तो एटलीस्ट 69 मेंबर्स मस्ट बी देयर, एंड नेशनल असेंबली की अगर आपके 342 सीट्स है तो 227 और 228 मेंबर्स मस्ट बी देयर. अगर ये लोग एक लेजिस्लेशन को पास करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए, देन इट कैन पास, अदरवाइज नॉट. इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 239 का क्लॉज 5 and 6 है, which actually ousts the jurisdiction of the courts to question the constitutional amendment. However, this is not the case in our context. जो जुडिशरी ने इंटरप्रेट किया है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को या इस प्रोविजन को, दे सेड के खासतौर पे जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन केस है 2015 का, under that court has actually reserved the right to strike down a constitutional amendment if it goes against the salient features of the constitution. ठीक है जी, salient features की जो डॉक्ट्रिन है, जिसको इंडिया में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है, उसके अंडर पार्लियामेंट ऑफ मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि we can assess, we can examine that whether a particular legislation goes against the salient features of the constitution, against the basic structure of the constitution, and we do reserve the right to actually question it and even strike it down. तो ये चीज अब established है. तो 239 clause 5 and 239 clause 6 की पेपर पे तो आपको मौजूदगी नजर आएगी, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोर्ट कैन ऑलवेज क्वेश्चन दीज अमेंडमेंट्स टू. ठीक है जी, ये इसमें बात आती है. जी नेक्स्ट करें प्लीज. ओके, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज इट जी? पहले आई वुड लाइक टू एक्चुअली इन्वॉल्व यू गाइस. जी, where there is ambiguity of law and inconsistency of law, when we check about according to logical interpretation as well as ambiguity as well as inconsistency. Okay. So it's how the judges define the law. It's how they define it, but they have to define it according to the intent of the people who made the law. I mean, this is the function. देखिए, एक जो important aspect है ना, जिसपे we see a debate happening sometimes, वो ये है कि does the court make the law or does the court interpret the law? This is the question. I mean, this has been the question wherever there is a written constitution. Sometimes it is felt that court is trying to legislate. Sometimes it is felt the court always says that we are not legislating, we are only interpreting, we are only filling in the gaps. ठीक है, हम लेजिस्लेट नहीं कर रहे, हम आपको बता रहे हैं कि इस चीज का मतलब क्या है. दैट इज आवर जॉब, दैट इज आवर अथॉरिटी. सो इंटरप्रिटेशन जो है प्राइमरीली इट्स द प्रोसेस कि अगर कोई देखे सर्टेन थिंग्स आर क्लियर, दे नीड नो इंटरप्रिटेशन व्हाटसोएवर. बट इफ देयर इज सर्टेन लेजिस्लेशन इन प्लेस, कोई भी लॉ ऐसा आता है जिसमें एम्बिग्विटी, राइट, एम्बिग्विटी है कि इसका मतलब क्या है,
So you go to the court to seek interpretation of that law. Now the interpretation is not a subjective interpretation, which means कि court जो है वो ये नहीं है कि जज साहब की जो भी मर्जी है या जो वो बेहतर समझते हैं उसका इंटरप्रेट करें. I mean, under the rules of interpretation, you can only give that sort of interpretation which is according to the will of the parliament जिसने वो पास किया था law. For that you need to see what was discussed in parliament, क्या चीजें हुई थी, बाकी चीजें, उसकी बेसिस पे आप किसी चीज को आइडेंटिफाई करेंगे अगर उसका मीनिंग आपको क्लियर नहीं है. नेक्स्ट चीज प्लीज. So if you could see, it's actually court can have more than one interpretations. जरूर ये भी हो सकता है sometimes कि एक law है, एक section है, उसकी interpretation एक से ज्यादा हो. आपने वो interpretation करनी है which is close to the interpretation or the intent of the parliament. वो आप अपनी तरफ से इवन दो आपको जितना मर्जी एक कोर्स ऑफ एक्शन बेटर लग रहा हो, ये एक प्रॉपर्टी का तकाजा है that you cannot actually make subjective assessments about what should the law be. You should only base your opinion, you should only base your interpretation upon the intent of the parliament कि हमारा ये ख्याल है कि पार्लियामेंट ये चाहती थी ये लॉ पास करना, ये बात वो बता नहीं सके इसलिए हम आपको बता रहे हैं. This is the art of interpretation. It's nothing कि आप खुद से करें. आगे जी प्लीज, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आप लोगों ने, you must have actually gone through them when you were in law schools. लेकिन still, first of all, statute must be read as a whole. ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. कभी भी आपने always ना एक सेक्शन अगर पढ़ी और आपने उसकी बेसिस पे कोई भी ओपिनियन, ना दिस इज फॉर यू इन प्रैक्टिस एज वेल, कि अगर आप प्रैक्टिस में भी जाते हैं एंड यू हैव टू कंसल्ट अ सर्टेन स्टैट्यूट, ठीक है, उस स्टैट्यूट के अंदर आपने देखना ये है कि इसका प्रोविजन का क्या मतलब है. इफ यू जस्ट पिक अ सर्टेन प्रोविजन और आप उसकी कोई प्रोविजन को भी नहीं देखते, आप उसकी कोई लिमिटेशंस को भी नहीं देखते, किसी क्वालिफिकेशन को भी नहीं देखते जो सेम लॉ में दी गई है, तो यू आर मेकिंग एन इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट स्टैट्यूट. ठीक है, दैट इज व्हाई अ स्टैट्यूट मस्ट बी रेड एज अ होल. जैसे से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में है कि एक वर्ड होता है, इसीलिए जो वर्ड्स है ना समटाइम्स वी टेंड टू इग्नोर देम, बट द थिंग इज कि जो वर्ड्स आते हैं सेक्शंस में, सब्जेक्ट टू, नॉटविथस्टैंडिंग, प्रोवाइडेड दैट, दे मस्ट बी given importance. ठीक है, हम असल में यूजुअली समटाइम्स वी ट्राई टू फॉरगेट देम और हम कहते हैं आगे चलते नहीं. वो जो लिखी होती है वजह से सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हर लेजिस्लेशन जो है इट इज टू बी पास्ड बाय द मेंबर्स हु आर वोटिंग, सिटिंग एंड वोटिंग. ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है कि जो आर्टिकल 239 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो इस पे फॉल नहीं करती. अब अगर आपने सिर्फ सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिस को मिस किया है और सिंपल आगे वाली लाइन पढ़ ली है, इट्स आर्टिकल 61 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने सिर्फ आगे वाली लाइन पढ़ ली है, दैट मींस कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी समझेंगे, आप कहेंगे मैंने तो आर्टिकल 61 देखा था. दैट इज व्हाई व्हेनेवर यू इंटरप्रेट a statute, whenever you want to see the meaning of a statute, you must do that by interpreting it wholly, not partially. Second, it must be constituted to make it effective. देखिए, कोर्ट की ऑलवेज ये मंशा होनी चाहिए कि आपको स्ट्राइक डाउन ना करना पड़े लॉ, आप कंटिन्यूटी रखें. ठीक है, इसे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी भी कहते हैं. दैट इट मस्ट बी इन द फेवर ऑफ द स्टैट्यूट. स्टैट्यूट मस्ट बी कैरिड ऑन, दे मस्ट नॉट बी मेड डेड. ठीक है, डेड लेटर ऑफ लॉ नहीं बनाना. थर्ड, अगर आप देखेंगे अगर एक चीज का मीनिंग प्लेन है, now this must be determined by the court. मतलब there are certain things which need no interpretation. Even a very ordinary person can understand what those provisions mean. You need not go into why this means that, right? तो कोर्ट ने उसको इफेक्ट देना है, कोर्ट की अपनी राय उस पर नहीं है. This is again the basic principle of interpretation. Next there are 3 rules, ये आपने देखे होंगे. कुछ केस लॉज पाकिस्तानी मैंने मेंशन वैसे किए हैं इसके साथ, लेकिन ये है कि प्लेन मीनिंग रूल है. फर्स्ट रूल, जिसको प्लेन मीनिंग रूल या लिटरल रूल भी कहा जाता है. This says that a statute लैंग्वेज ऑफ स्टैट्यूट मस्ट बी गिवन ऑर्डिनरी मीनिंग. ठीक है जी, उसके ऊपर कोई स्पेशल मीनिंग आप अटैच नहीं करेंगे, वही मीनिंग देंगे जो लैंग्वेज ऑफ लॉ कह रही है, कुछ खुद से आप नहीं करेंगे. गोल्डन रूल, अगर आप प्लेन मीनिंग देते हैं किसी स्टैट्यूट को एंड इट लीड्स टू एन एब्सर्डिटी, एब्सर्ड रिजल्ट आता है, उस केस के अंदर आप उसे पर्पसिव इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. आगे अगर आप देखें तो मिसचीफ रूल है जी. मिसचीफ वैसे किसको कहते हैं? अरे शरारत को भी कहते हैं, बिल्कुल. देखिए, मिसचीफ का मतलब यहां पे जो है ना, दिस इज प्रॉब्लम. व्हाट वाज द प्रॉब्लम? ठीक है, जिसको एलिमिनेट करने के लिए एक लॉ आया है, राइट? आप इस चीज को देखेंगे, जैसे से अगर इन केस आप इंटरप्रेट कर रहे हैं किसी भी लॉ को, इन अ वे देख लें कि व्हाट वाज द नीड फॉर एंटी टेररिस्ट एक्ट ऑफ 1997. ठीक है,
क्यों लेके आया? आपके पास पीपीसी में प्रोविजंस, एम्पल प्रोविजंस हैं, बाकी जगहों पे हैं। फिर आप जब उसको देखेंगे तो आपको शायद सुप्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट पे जाना पड़ेगा, वो 1975 में पास हुआ है। आप देखेंगे वो उसकी क्या जरूरत पड़ी थी, इसकी क्या जरूरत पड़ी थी, आगे क्या जरूरत पड़ रही है। दैट इज हाउ यू लिंक कि व्हाट वाज द नीड फॉर अ स्पेसिफिक लॉ। मिस्चिफ रूल ये आपको बताता है कि इफ यू आर अनएबल टू मेक सेंस ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, यू मस्ट सी द डिटेल्स के व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट द लॉ वाज मेंट टू अचीव, किस प्रॉब्लम को उन्होंने वो करना था, ये चीज देखनी है। और नए लॉ के अंदर क्या किस तरीके से उसको रेमेडी प्रोवाइड की गई है। प्रिंसिपल कुछ यूं है कि जो इंटरप्रिटेशन मस्ट बी वन दैट एडवांसेस द रेमेडी एंड सुप्रेसेस द मिसचीफ, ठीक है, जिस मिसचीफ के लिए वो लॉ आ रहा था। जी नेक्स्ट करें प्लीज। नाउ इफ यू कैन सी दिस, जी ये लैंग्वेज ऑफ लॉ है, इसको आप लोगों ने देखा भी होगा। कुछ चीजें हैं जिस तरह एंड और है, ठीक है, इफ ये लिस्ट में होगा, अगर किसी भी लॉ में कोई लिस्ट दी जा रही है, इफ देयर इज एंड दैट मींस कि इस लिस्ट के जितने भी आइटम्स हैं दे मस्ट बी देयर। अगर इनमें से एक भी मिस करता है तो ये अप्लाई नहीं करेगी बात। और डिसजंक्टिव होता है विच मींस कि इनमें से कोई भी चीज है तो इट इज ओके, राइट। ये है मे और शेल, बड़ा इजी है, कन्वीनियंटली आप सुनते होंगे। व्हेनेवर मे इज रिटन इट रिफ्लेक्ट्स सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रेशन इन द लॉ, ठीक है, वो डिस्क्रेशन को जाहिर कर रहा है। लेकिन जहां शेल है वो मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ है, वहां यू हैव नो वे आउट। अदर देन दैट अनलेस एंड एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शन के लिए होता है। अक्सर लॉज में, एक्ट्स में आप देखते होंगे अनलेस का वर्ड होता है, एक्सेप्ट का वर्ड होता है। इसका मतलब है आप किसी चीज को क्वालिफाई कर रहे हैं, एक्सेप्शन दे रहे हैं। सब्जेक्ट टू का भी यही मतलब है कि इट लिमिट्स द स्कोप ऑफ द स्टैट्यूट। आफ्टर दैट इवन इफ बिफोर आफ्टर प्रोवाइडेड दैट, इसमें भी आप लिमिट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो वर्ड्स है ना, वी समटाइम्स मिस दीज वर्ड्स। नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब है यू आर गिविंग ओवरराइडिंग इफेक्ट टू सम प्रोविजन ऑफ लॉ। ओवरराइडिंग इफेक्ट का मीनिंग है कि जहां जहां पे जो भी लिखा हो ये चीज अप्लाई करेगी। Whenever you see notwithstanding anything contained in any law, ये लिखा होता है अक्सर लॉज में, देखा होगा आपने, उसका ये मीनिंग है कि you are giving preference to this piece of legislation, आप बाकी को नहीं कर रहे। एंड आफ्टर दैट अगर आप देखें तो इसके बाद ईच एवरी, ये टर्म जो है किसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। जी नेक्स्ट, अच्छा फिस्कल स्टैट्यूट्स। फिस्कल स्टैट्यूट्स की इंटरप्रिटेशन क्या होती है? अगर कोई टैक्सेशन से रिलेटेड स्टैट्यूट आ जाता है और उसमें एम्बिग्विटी आती है कि जी ये टैक्स लगा है किसी पे या नहीं लगा, तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट में या हमारी जो सुपीरियर जुडिशरी है उसने जो इस पे दे हैव मेंशन्ड सर्टेन रूल्स, उसमें जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ इंटरप्रिटेशन कि सच लॉ मस्ट ऑलवेज बी इंटरप्रेटेड इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर, ठीक है। अगर आपकी कोई चार्जिंग सेक्शन है जो टैक्स चार्ज कर रही है आपके ऊपर और उसमें एम्बिग्विटी आती है, तो एज अ टैक्स पेयर आपको जो जिस इंटरप्रिटेशन से फायदा हो रहा है वो करनी है, डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हक में इंटरप्रिटेशन नहीं करनी। मतलब ये है इसका कि चार्ज नहीं फिर करना, जो आपको रिलीफ एज अ टैक्स पेयर मिल रहा है वो देना है। दिस इज द चार्जिंग प्रोविजन। आगे जी प्लीज। आगे जी ये these are the two rules, I think you must have gone through them, justum generis and causus omissus। आइडिया है जी justum generis का? Anyone? देखिए, when you have a list of certain things in the law, right? List of certain things, एक provision of law है जिसके अंदर से मैं वैसे एग्जांपल देता हूँ। अगर एक एम्यूनेशन का लॉ है या वैसे एम्यूनेशन का लॉ है, उसमें एम्यूनेशन के लॉ में है कि आपके पास फायर आर्म्स हैं, आपके पास इस तरह की चीजें हैं, बारूद है वगैरह वगैरह। अब उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल अगर आ जाता है, ठीक है, मतलब उसका आखिर में लिखा होता है एनी अदर सच लाइक आर्टिकल, इस तरह की बात एक जनरली लिख दी जाती है। आपने एक लिस्ट दी, ठीक है, उस लिस्ट के आखिर में आपने लिख दिया एनी अदर सच आर्टिकल, एनी अदर सच थिंग। नाउ दैट एनी अदर सच थिंग नीड नॉट बी अ बेकरी आइटम, ठीक है, वो बेकरी आइटम को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी किसको? किसी फायर आर्म को रिप्रेजेंट करेगी। अगर कोई फायर आर्म है, अगर आप कह रहे हैं एनी अदर में सब चीजें आ जाती है, तो वो नहीं है। जस्टम जनरस मीन ऑफ द सेम जिनस और स्पेसिमेन और स्पेसिफिक टू समथिंग दैट इज गिवन इन देयर। कॉजेस ऑफ मिसेस एक वो भी इंटरप्रिटेशन की ही प्रोसीजर है। दिस सेज कि अगर आपकी इंटरप्रिटेशन जो है उसमें आपको लॉ में कमी नजर आ रही है, say there is a vacuum in a law, court does not have mandate to fill in the vacuum, ठीक है, कोर्ट ने वही इंटरप्रेट करना है जो causes omissus का मतलब है कि you need not fill in the omissions, आप इसलिए वहां नहीं है, आपके सामने जो चीज है you only have to deal with that, ठीक है। आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं थोड़ा सा जस्ट स्ट्रक्चर आपको दिखाना था। जी नेक्स्ट करें प्लीज स्लाइड। स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल, ये एक्ट में भी सिमिलर ही है, लेकिन ये देख लीजिए प्लीज जी। सो इट ऑल स्टार्ट्स विद अ शॉर्ट टाइटल, ठीक है। आप जो लॉज देखते हैं, पाकिस्तान पीनल कोड 1860, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872,
एवरी लॉ उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक शॉर्ट टाइटल होगा। इस टाइटल का इंटरप्रिटेशन में डायरेक्ट रोल नहीं है, इसका मीनिंग है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। ठीक है, हमारे लिए ये कहना बहुत इजी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बजाय इसके कि एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये चीज करनी थोड़ी सी टीडियस और डिफिकल्ट है। फॉर सेक ऑफ रेफरेंस एक शॉर्ट टाइटल होता है किसी भी लॉ का। आगे लॉन्ग टाइटल आपने फिर आगे देखा होगा कि लिखा होता है, जो बात मैंने भी की है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अ बिल टू प्रोवाइड, सिविक एजुकेशन एक्ट की मैं बात करूं, अ बिल टू प्रोवाइड फॉर एंड प्रमोट सिविक एजुकेशन एंड क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजन, दिस इज द लॉन्ग टाइटल ऑफ द स्टैट्यूट। ठीक है, ये लॉन्ग टाइटल है, ये थोड़ा सा स्कोप बताता है कि व्हाट आर वी डीलिंग विद हियर। नेक्स्ट प्रियम्बल होता है जी। प्रियम्बल ये वेयर एज से स्टार्ट होता है, आपने देखा होगा लॉज में वेयर एज लिखा होता है अक्सर। ठीक है, कैपिटल में लिखा होता है वेयर एज। So this gives you the scope, आपको पता चल जाता है preamble पढ़ के, it's not necessary that you find preamble in every statute, लेकिन कुछ में होता है, जिनमें होता है उसका मीनिंग ये है, that is to actually tell you कि इसका स्कोप क्या है। ठीक है, ये किस चीज से डील करेगा, ये जो स्टैट्यूट है इसकी क्या लिमिटेशन है, कहां तक ये जाएगा। Then comes the enacting clause. This is very important. ठीक है, it is enacted as follows. This is written in the statute book. इसका मीनिंग ये है कि इसके अंदर अथॉरिटी जाहिर हो रही है कि ये इस अथॉरिटी के अंडर इसको इनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसको इनेक्टिंग क्लॉज कहते हैं, जहां पे लिखा होता है नीचे किसी भी लॉ में, इट इज इनेक्टेड एज फॉलोज। आगे देन वी हैव सेक्शंस, सबसेक्शंस एंड पैराग्राफ्स। ठीक है, ये बेसिकली सेक्शन इज लाइक अ हेडिंग, उसके नीचे जो है सब सेक्शन, इट एक्चुअली डिफाइंस दैट हेडिंग डिफरेंट वेज में, 1 2 3 वो सब सेक्शन है। जो ऊपर है, जैसे यहाँ पे मैं आगे बात कर, नेक्स्ट करें ये, इफ यू सी दिस, दिस इज द लॉ, सिविक एजुकेशन का ही लॉ है, सॉरी, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2012। नाउ इफ यू सी द बेसिक 20 जो लिखा है, दिस इज सेक्शन 20, मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड राइट्स टू एजुकेशन, एंड इफ यू सी द ब्रैकेट दैट इज सब सेक्शन, सेक्शन 20 सब सेक्शन 1 जो नीचे है, और उसके नीचे जो एबीसी में आपको अल्फाबेटिकल नजर आ रहे हैं, दे आर द पैराग्राफ्स। वो स्ट्रक्चर में पैराग्राफ्स में कहा जाता है, वो मजीद उस सब सेक्शन को डिफाइन करते हैं कि वो क्या है जी। नेक्स्ट आगे कमेंसमेंट और एक्सटेंड थी कि एक तो बात है कि ये कब से ऑपरेशनल हो रहा है लॉ। ठीक है, व्हेन विल इट टेक इफेक्ट, व्हेन विल इट टेक फोर्स, ये है कमेंसमेंट। आप बताएंगे कि ये लॉ आज, मतलब यू कैन एक्चुअली स्टार्ट अ लॉ फ्रॉम अ फ्यूचर डेट, ये भी हो सकता है। से आज आप एक लॉ पास करते हैं, आप कहते हैं कि ये 6 मंथ बाद इनेक्ट होगा, ये आप कर सकते हैं, पार्लियामेंट कैन डू दैट, और होता भी है। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट वाज अडॉप्टेड ऑन 10th of April 1973, but it came into force on 14th August 1973। ठीक है जी, ये होता है, किया जा सकता है। ये आपने देखना है कि कब से कमेंसमेंट हो रही है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि कभी अगर किसी भी इस तरह के लॉ में मसला आए, किसी भी लॉ के इंटरप्रिटेशन में, और आपको उस लॉ को अप्लाई किया जा रहा हो उस पीरियड में जहां पे उसकी कमेंसमेंट नहीं थी, तो वो गलत होगा फिर। ठीक है, आप कमेंसमेंट डेट से लॉ की ऑपरेशनलिटी को देखेंगे। रेट्रोस्पेक्ट लॉज कुछ चीजों में अलाउड है, क्रिमिनल में तो बिल्कुल भी नहीं है, और बाकी वो कुछ क्यूरेटिव लॉज कहते हैं उन्हें, जिस तरह टैक्सेशन के बाकी लॉज है जहां पे मतलब रिलीफ देने की हद तक किया जा सकता है, वैसे रेट्रोस्पेक्टिविटी इज डिस्करेज, वो नहीं किया जाता। अच्छा जी, एक्सटेंड का मीनिंग है कि वेयर डज दिस लॉ अप्लाई। अगेन वो जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की आपसे बात की है, ये वहां पे आएगी बात की, डज इट अप्लाई टू होल कंट्री और डज इट अप्लाई टू अ पर्टिकुलर प्रोविंस, ये चीज उसमें आ जाती है जी। डेफिनेशन क्लॉज पे जाइए, आपने अक्सर देखा होगा सेक्शन 2 जो है वो इंटरप्रिटेशन या डेफिनेशन क्लॉज कहलाता है किसी भी लॉ का, वेयर डेफिनेशंस आर गिवन। डज एनीवन नो कि व्हाई डू वी नीड डेफिनेशंस इन प्लेस? आई मीन क्या उसका व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग दोस डेफिनेशंस जी? बार-बार उस वर्ड को डिफाइन करना। एग्जैक्टली, यू दिस इज आई मीन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, आप बार-बार एक चीज को पूरे लॉ में डिफाइन करें, आप उसको शुरू में डिफाइन कर दें एंड यू एक्चुअली रिफर टू दैट, उसको बस आप सिंपल एक वर्ड में वहां आगे रेफर करेंगे, इसलिए ये कन्वीनियंस का है। और आपने स्कोप भी पता चलता है कि इस डेफिनेशन में देखें, अगर एक लॉ है ना, अगर एक लॉ है उसमें एक डेफिनेशन दे दी गई है, तो उस लॉ के अंदर से चाइल्ड की डेफिनेशन है, चाइल्ड की डेफिनेशन है अ पर्सन लेस देन 18 years of age, अगर ये लिखा हुआ है, ठीक है, उस लॉ की हद तक लेस देन 18 years of age। अगर किसी और लॉ में कोई और एज लिखी हुई है, उस लॉ की हद तक वो एज होगी। सो दिस इज रेलेवेंट टू द स्पेसिफिक स्टैट्यूट। ठीक है, अगर यहां आपको मसला होता है तो देयर इज अ लॉ दैट इज जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, ठीक है, विच इज द एक्चुअल लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन हमारा जो है, वहां से आप देख सकते हैं अगर कोई डेफिनेशन नहीं मिलती, कोई रूल में मसला हो रहा है, ऑपरेशनल चीजों के अंदर इशू आ रहा है, तो दैट कैन बी कंसल्टेड। ठीक है, इफ यू डोंट फाइंड द आंसर इन द रेलेवेंट स्टैट्यूट। आगे
नेक्स्ट इज रिपील क्लॉज। रिपील होता है कि अगर इफ यू आर ब्रिंगिंग इन न्यू लेजिस्लेशन तो जो पुराना लॉ है उसको आप रिपील कर सकते हैं। मतलब ये है कि दैट लॉ इज नो मोर नीडेड, अब आप उसे रिपील कर रहे हैं। रिपील का इफेक्ट ये होता है कि रिपील के अंदर यूजुअली एक सेविंग क्लॉज भी दिया जाता है, ठीक है। उसका मीनिंग ये है कि से आज एक लॉ है जो कि आज आप रिपील करते हैं, टुडे 2 मार्च, ठीक है, और उस लॉ के अंडर कुछ प्रोसीडिंग्स चल रही थी लोगों की। व्हाट वुड बी द फेट ऑफ दोज प्रोसीडिंग्स? फिर आप देते हो सेविंग क्लॉज, ठीक है। इसीलिए लिखा होता है सेविंग क्लॉज में कि जिनके मुकदमात या जिनकी भी प्रोसीडिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ बिफोर द रिपील दे वुड कंटिन्यू टू हैपन, बट आफ्टर दिस डे आपकी जो बाकी लोग आएंगे दे वुड बी अंडर द न्यू लॉ, ठीक है। रिपील का ये मैकेनिज्म है। रिपील एंड सेविंग लिखा होता है अक्सर सेक्शंस में। उस सेविंग क्लॉज का ये मतलब है यू गिव द सेविंग टू द ऑपरेशन ऑफ दैट लॉ, ऑफ द रिपील्ड लॉ, so that the people who were actually litigating under the previous law could continue to litigate। ये एक उसके अंदर रीजन आता है थोड़ा सा। आगे जी प्लीज। अच्छा, नेक्स्ट इज ओवरराइडिंग क्लॉज। ओवरराइडिंग क्लॉज मैंने आपको बता दिया, वेरेवर ये जो वर्ड है ना नॉटविथस्टैंडिंग ये आता है, दैट मींस कि आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को, इस पर्टिकुलर प्रोविजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एज कंपेयर टू द अदर प्रोविजन। एंड नेक्स्ट करें प्लीज। लास्ट इज द रूल मेकिंग, जो शुरू में मैंने बात की थी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की। समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द पार्लियामेंट टू डील विद ईच एंड एवरी अफेयर of the institution which they have created. What they do is they give this power of rule making to make bylaws, to make regulations to the respective institutions. जैसे से एक यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करती है पार्लियामेंट, ठीक है, वो एक्ट के अंडर यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट बना देती है। अब आप ये तो नहीं करोगे ना कि पार्लियामेंट उनके अंदर जो टीचर्स को भर्ती करना वो भी आपको तरीका होता है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो भी पार्लियामेंट बना के दे। फॉर दैट यू नीड रूल्स, ठीक है, रिक्रूटमेंट रूल्स, एडमिशन रूल्स, बाकी चीजें वो यू डेलीगेटेड अंडर रूल मेकिंग क्लॉज के जी द अथॉरिटी मे मेक रूल्स फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, ये लिखा होता है यूजुअली, ठीक है, लॉ के अंदर। दैट मींस कि टू फर्दर द पर्पसेस ऑफ द एक्ट आप रूल्स बना सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू जी। आई गेस जी। During the lecture you said that ordinance अगर 120 days extend करना चाहता है तो within 120 days पार्लियामेंट को 120 days more उसको एक्सटेंशन करके that will once only। तो सर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001 से अभी तक चल रहा है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। सेकंडली सर ना जो ऑर्डर होता है जैसे कानून में शार ऑर्डर है व्हाट अबाउट दैट जी प्लीज। देखिए आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, लेकिन इसमें ना एक ये है कि आर्टिकल 270 को आप देखें, वहां पे सेविंग दिया गया है कुछ लॉज को, ठीक है। जो अयूब खान साहब के दौर में ऑर्डिनेंसेस थे, जिया साहब के दौर में ऑर्डिनेंसेस थे, मुशर्रफ साहब के दौर में जो फर्स्ट उनकी टर्म में इमरजेंसी के बाद नहीं, वो नहीं, दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड। 270A आपको नजर आएगा, 270AA नजर आएगा, ट्रिपल ए की ट्राई हुई थी बट इट कुड नॉट एक्चुअली मटीरियलाइज, ठीक है। 2007 की इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। दैट इज व्हाई उनका नाम ही वो है कि पार्लियामेंट ने इनको एज इट इज मान लिया है, ये लॉज है। अगर आप नहीं मानेंगे तो एक बहुत बड़ा लीगल वैक्यूम आ जाएगा, उन चीजों के ऊपर लॉज आपको नहीं मिलेंगे। दैट इज व्हाई पार्लियामेंट ने इसको प्रोटेक्शन दे दी है। ऑर्डर्स की जहां तक बात है, देखिए ऑर्डर जो है वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स अंडर NFO किए जाते थे, ठीक है, डायरेक्टली उसके अंडर नहीं था। उनको भी इसलिए प्रोटेक्शन देके आपने एक तरह से वो कर दिया है ताकि बजाय आप नया लॉ ऑफ एविडेंस लेके आए तो उस ऑर्डर को ही कंटिन्यू करें। राइट जी, थैंक यू जी। अभी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग ब्रेक करेंगे, टाइम 12:20 आप लोग 12:45 असेंबल हो जाएंगे, क्योंकि ऑनरेबल मेंबर्स भी आएंगे सारे, और एक ह्यूमन राइट्स पर लेक्चर जनाब मुस्तफा नवाज को पर एक सेनेटर देंगे। उसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी, आपको लंच इन्हीं सीट्स पर सर्व किया जाएगा, और आई होप सो कि आप डिसिप्लिन रखेंगे, बाहर या दूसरी जगह नहीं जाएंगे। तो आज उसके बाद आपका 2 वीक कोर्स जो है कंप्लीटेड, और मैं आप सबका मशहूर हूँ, आप लोगों ने कोऑपरेट किया, नॉट 100% बट नॉट लेस देन 75%, इट इज गुड रेशियो। और इंटरव्यू का जहाँ तक तल्लक है, मैं आज भी हाई कोर्ट कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ एनरोलमेंट कमेटी, जो कि ऑनरेबल जज
चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अपॉइंट करेंगे तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कमिंग वीक में ये हो जाए। एज एंड व्हेन आई रिसीव द लेटर, जो उसके बाद जो पहला काम होगा वो ये होगा कि मैं लोअर कोर्ट के, चूँकि हम परमिशन लेते हैं जज साहब से, हमारे ऑनरेबल मेंबर जनाब राजा मोहम्मद अलीम खान अब्बासी और साथ सैयद कमर सैन शाह साहब जवारी इनरोलमेंट कमेटी के मेंबर हैं, वो यहाँ ही कंडक्ट करेंगे इंटरव्यू। एंड आई एश्योर ऑल ऑफ यू कि मैं मैक्सिमम लोगों का इंटरव्यू, हम तो कोशिश करेंगे एक ही दिन में हो जाए, अगर ना हुए तो 2 दिन में हम कर लेंगे। हम चूँकि बैकलॉग बड़ा है, नेक्स्ट बैच ऑलरेडी आज हम वो प्लान कर रहे थे, तो चूँकि शेड्यूल हमने 13 का दिया हुआ है, आज हम डिस्कशन करेंगे उनका भी 6 तारीख कर लें। तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों का जितना बैकलॉग है उससे ख़त्म किया जाए। तो हम चाह रहे हैं कि रमज़ान शरीफ से पहले पहले आपको लाइसेंसेस दे दिए जाए, ताकि उस मुबारक महीने में आप काम शुरू करें और उसकी शुरुआत अच्छी हो। तो थैंक यू वेरी मच। अभी ब्रेक है एंड आई होप कि मुझे दोबारा कहना नहीं पड़ेगा, आप 12:45 पे रीअसेंबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Era capim.